Welcome friends, welcome to the lecture series of digital electronics. So in this session we are going to learn about the D flip-flop. So D flip-flop क्या है वो हम यहाँ पे understand करेंगे. The D flip-flop tracks the input making transitions with match those of the input D. हमारे यहाँ पे जो D input है उसके साथ ये जो है वो मैच करने के लिए ट्राई करेगा. मतलब ये डेटा फ्लिप फ्लॉप को से भी जाना जाता है. मतलब जो भी बिट हम यहाँ पे देंगे वो बिट ये इसके अंदर स्टोर करेगा और जब भी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी तब ये हमें आउटपुट में देगा. So the D stands for the data. This flip-flop stores the value that is on the data line and it can be thought of as a basic memory cell. A flip-flop can be made from a set or reset flip-flop by trying the set to the reset through an inverter. The result may be clocked also. हम टाइम इंटरवल के लिए क्लॉक का भी यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं डी फ्लिप फ्लॉप को. ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डी फ्लिप फ्लॉप है जिसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई भी हम जो बिट दे रहे हैं इसके इनपुट पे वो इसके अंदर हमें स्टोर करके देगा. जैसे कि हमने 1 बिट मेमोरी सेल के अंदर देखा था कि कोई एक बिट जो है वो पर्टिकुलर टाइम पे उसके अंदर स्टोर हो रहा था फॉर द मेमोरी पर्पस. एंड आफ्टर दैट व्हेनेवर वी रिक्वायर दैट इनपुट, जब भी हमें वो डिजिट चाहिए तभी हमें कोई स्पेसिफाइड इनपुट देना होता है ताकि वो जो स्टोर्ड डेटा है वो हमें आउटपुट पे मिल सके. सो इसकी बेसिकली जो एक एप्लीकेशंस रहेगी वो कैसी जगह पे रहेगी जहाँ पे हमें सिंपल डेटा इनपुट स्टोरेज करना है और आउटपुट में चाहिए होगा. whenever we require the data we will use this D flip flop. Okay, so this way D flip flop will work. So let's get through the details of this D flip flop and the circuit diagram. So this is a basic circuit. You can see the output Q will track the input D. अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी इनपुट है वो देंगे. ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये जो इनपुट है उसको ट्रैक करने के लिए कोशिश करेगा. द आउटपुट Q विल ट्रैक द इनपुट D सो लॉन्ग एज द फ्लिप फ्लॉप रिमेन्स एनेबल्ड. जब तक हमने इसको टर्न ऑन रखा है, मतलब कि एनेबल करके रखा है. ठीक है, एनेबल करना मतलब जब भी हम इसको 1 इनपुट देंगे तो ये जो है वो एनेबल मतलब स्टार्ट होगा. 1 ऑन दिस लाइन ड्राइव्स Q हाई इफ द एनेबल इज 1. अगर यहाँ पे हम 1 दे रहे हैं तो ये जो Q है उसको हाई पे सेट करेगा. मतलब 1 मतलब हम +5 वोल्ट एज्यूम कर रहे हैं और 0 मतलब 0 वोल्ट्स हम एज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, सो एनेबल विल बी 1 ऑन हाई कंडीशन बिकॉज हम यहाँ पे 1 दे रहे हैं तो 1 दे रहे हैं तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा. मतलब कि दोनों ही 1 हो जाएंगे or both will be on the higher side. Okay, so it will set a particular input for the D flip flop. This way it can be done. So here you can see that the flip flop will provide you the output at the Q and Q bar. That is our output terminals. इसके ऊपर हमें जो है वो output मिलेगा. So अभी ये क्या करेगा that this one is the inverter which feeds the reset of the latch to drive Q to 0 and if D is equals to 0 and enable is equals to 1. जब भी ये D हमारा 0 रहेगा और तो ये वाला बिट भी यहाँ पे 0 हो जाएगा पर इसकी आउटपुट जो है वो हमें 1 मिलेगा और साथ में यहाँ पे enable जो है वो भी 1 सेट होगा. तो तभी ये क्या करेगा दैट इट विल ट्राई टू रीसेट. अभी जो पुरानी वैल्यू है उसको इरेज करेगा, मतलब कि एक बार आउटपुट में दे दी उसके बाद जो है वो दूसरी नई वैल्यूज़ के लिए स्टोरेज को ओपन कर सकता है. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग फॉर द डी फ्लिप फ्लॉप. लेट्स गेट अंडरस्टैंड फॉर द मोर डिटेल्स ऑफ दिस डी फ्लिप फ्लॉप. देखिए यहाँ पे अभी हमें आउटपुट जो है
उसके लिए हमने क्लॉक लिया है। यहाँ पे क्लॉक यूज कर रहे हैं एनेबल की जगह पे। क्लॉक मतलब एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे जो है वो हमें पल्सेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो एनेबल जो है ये इसके ऊपर से डिफाइन होगा। वेन एवर द पल्स इज गोइंग हाई, पल्स अगर ऊपर जा रहा है मतलब हायर साइड जा रहा है, तभी जो है वो एनेबल सेलेक्ट करेगा, मतलब कि 1 लेगा। और जब भी ये डिक्रीज हो रहा है मतलब घट रहा है, 1 से लेके 0 पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो उस पीरियड के लिए ये जो है वो कंसीडर करेगा कि लो एनेबल है, ठीक है। दैट मीन्स द डी फ्लिप फ्लॉप विल नॉट बी एनेबल्ड, मतलब वर्किंग में नहीं आ सकता, ठीक है। और अगर 0 से लेके 1 तक जा रहा है तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये वर्किंग में आ सकता है, दैट इज अवर हायर साइड। तो ये जो मैंने बताया, ये जो एज है तो इसको हम एज ट्रिगर्ड बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें कि ये पूरा आफ्टर अचीविंग दी फुल हायर साइड, दैट मीन्स कंप्लीटली 1 हो जाने के बाद ये अगर ट्रिगर हो रहा है और यानी कि एनेबल हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लेवल ट्रिगर्ड इनपुट, लेवल ट्रिगर्ड क्लॉक, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है वो आगे जाके आपको यूजफुल रहेगा, एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड। सो डी फ्लिप फ्लॉप will be considered like in this way for the clock, or we can say for any other flip flop the clock concept will be same for edge triggered and level triggered. Okay, so kindly understand these conditions of edge triggered and level triggered, how it will be done. Whenever the input is going 0 to 1, that is high, it is going if it is going to the higher side, then the clock will be considered as enable 1 while the edge triggered is applied. And whenever we talk about the level trigger, then it is to be like that, it is completely on the higher side. For the it is compulsorily on the 1, not any other values, okay, or we can say the only plus 5 volt. So that's how it is working for the edge trigger and level trigger. So that's how a clocked D flip flop will work. So it is a basic data input, or we can say the data flip flop. So the secondary name of this flip flop is also called as the D flip flop, or we can say the data flip flop, right? So that's how the work is being done. Here you can apply NOR gate also instead of this NAND gate. So it is also feasible, and it is also possible that if you use the NOR gates, okay. So that's how it is. So let's get into the some more details. So in more details, the output is taken as this way, the clocked D flip flop, and there has been some diagram regarding the particular clocked D flip flop. So you can see that how diagram will work. Here how diagram is represented. The D flip flop tries to follow the input D but cannot make the required transitions unless it is enabled by the clock. यहाँ पे clock 1 है, ठीक है। यहाँ पे clock जो है वो हमें दिया गया है, ये हमारा D है और ये जो हमारा है वो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि D is trying to D flip flop is trying to follow the D but cannot. यहाँ पे देख सकते हो कि ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ज़्यादा आगे जाके बंद हो रहा है, मतलब कि क्लोज हो रहा है। हमारा जो पल्स है वो डाउन जा रहा है, कितने तक में? आफ्टर सम टाइम whenever the D is at the 0 value. Clearly understandable? So that's how it is trying to cope up with the D, but it is not being possible. So it is like that. Here you can easily understand the concept of that clock. This is called as, if it is turning on this particular this values from 0 to higher values of 1, then it is called as the edge. And this one, if it is turning on for this values of clock, then it is called as the level triggered. So this is my level and this one is my edge.
that is in vertical condition and the level is in horizontal condition. So that's how the level triggered and edge triggered flip-flop will be considered. Okay. So if the clock is low when a transition in D occurs, the tracking transition in Q occurs at the next upward transition of the clock. So जब भी हमारा ये ज़ीरो हो जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा कि जब भी ये डी ऑन हो रहा है तब उसी टाइम पे ये वापस से ऑन होने के लिए ट्राई करेगा, बट इट विल बी समवट डिलेड. So that is how the D flip-flop will be working and that's how the output will be achieved. So that is the main idea of the D flip-flop. So I hope all of you must be clear with the idea of the D flip-flop. If you like this video and if you gain some of the knowledge from this clocked D flip-flop, or we can say the D flip-flop, then you should like and share the video and also subscribe to my channel. So that's all for the D flip-flop. Thank you for watching the video.